Hi, my name is Suhas Labde. I'm the owner, CEO, founder of Centrans F2F Logistics, mainly into a business of transport engineering for heavy lifts and end-to-end logistics. I got connected with SIL nearly 2 months back, and experience has been amazing. I have attended 2-3 webinars and even masterclass. And I must say it was a 360-degree overview of entire organizational functional hierarchy. Every expert gave their inputs, which I can correlate with my company. And definitely I'm going to practice those findings and learnings in my company. And looking forward to get attached to Aramb, SIL, and all the team members in coming future. Thank you. I am Bhupen Hurde, representing of Sharda Cable Trays. हम लोग को केबल ट्रे मैन्युफैक्चरिंग करता है एट पुणे शिंदेवाड़ी महाराष्ट्र में। आराम मेरे लिए बहुत ही नाइस अच्छा एक्सपीरियंस था। इसमें मेरे को बजटिंग और जो कॉस्टिंग रहता है वो दोनों के बारे में मालूम पड़ा। बजटिंग के बारे में ऐसा है कि अपने को जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मतलब पूरे साल भर का अपन को बजट कैसा है डिसाइड करना है वो पहले मालूम पड़ता है। और जो भी कंपनी से सपोज अपन बाहर की जो कंपनी या बैंकिंग है जिससे हम लोन लेते हैं उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कौन सा हमको लोन कम दाम में मिलेगा, ये यहाँ से मेरे को एजुकेटेड मिला। मेरे को सबसे अच्छा सेशन पहले तो इंट्रोड्यूस योगेश सर ने किया, उसके बाद मेरे को HR का जो सेक्शन लगा राय सर ने जो लिया वो सबसे बेस्ट लगा, जो मेरे कंपनी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। My name is Manish Oram and I'm from Aurangabad. My company name is Oram Traders. We are dealing in solar systems, CCTV camera surveillances and electrical vehicle charging systems. This is my first attempt with the SIL, and I just understand that I know I don't know, because just it is very essential stage that I have learning started, and I am confident that by the end of 1 year I am fully aware of this all the situations in that. The financing is most essential stations for me. For it is for my point of view, sales is more important in my field. So Mr. Akshay Seth will be the first navigator to interact. I will want to interact with him. SIL, of course, it is a very trusted and 100% respected here, definitely. Yeah. Myself Sharad Gore, and I represent Trimurti Standing Equipment Private Limited. We are in the stainless steel fabrication. We produce the stainless steel cabinets, and we are in the food processing equipments. I have been associated with the SIL from Yogesh sir from second batch, and this Arambha is a very excellent activity.
and I'm very happy that I have joined this program and my whole team is joined this program. And I'm damn sure that anyhow I was supposed to start the AOP activity, and luckily Mr. Yogesh sir called me and tell me about this Aram, and I'm happy that it's worth.
Hi, my name is Suhas Labde. I'm the owner, CEO, founder of Centrans F2F Logistics, mainly into a business of transport engineering for heavy lifts and end-to-end logistics. I got connected with SIL nearly 2 months back, and experience has been amazing. I have attended 2-3 webinars and even masterclass, and I must say it was a 360-degree overview of entire organizational functional hierarchy. Every expert gave their inputs, which I can correlate with my company, and definitely I'm going to practice those findings and learnings in my company, and looking forward to get attached to Aramb, SIL, and all the team members in coming future. Thank you. I am Bhupen Hurde, representing of Sharda Cable Trays. आम्ही लोग केबल ट्रे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एट पुणे शिंदेवाड़ी महाराष्ट्र में। आराम मेरे लिए बहुत ही नाइस अच्छा एक्सपीरियंस था। इसमें मेरे को बजटिंग और जो कॉस्टिंग रहता है वो दोनों के बारे में मालूम पड़ा। बजटिंग के बारे में ऐसा है कि अपने को जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसको मतलब पूरे साल भर का अपन को बजट कैसा डिसाइड करना है वो पहले मालूम पड़ता है। और जो भी कंपनी से सपोज अपन बाहर की जो कंपनी या बैंकिंग है जिससे हम लोन लेते हैं उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कौन सा हमको लोन कम दाम में मिलेगा, ये यहाँ से मेरे को एजुकेटेड मिला। मेरे को सबसे अच्छा सेशन पहले तो इंट्रोड्यूस योगेश सर ने किया, उसके बाद मेरे को HR का जो सेक्शन लगा राय सर ने जो लिया वो सबसे बेस्ट लगा, जो मेरे कंपनी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। Good evening, everybody. Just confirm if you can hear me, if you can see me. Good evening, everybody. Good evening. Just confirm if you can see and hear me. Yeah, that's it. Wonderful. Very nice. Very nice. Okay. Now, while we are going to start off with our session today, आज हम जो बात करने वाले हैं कि प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बजट में कैसे इंपॉर्टेंट होती है, किस तरीके की रणनीति अपनाऊं, किस तरीके के चीजें करूं जिसके वजह से मेरी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी अच्छी हो या प्रोडक्ट में मैं ज्यादा पेनिट्रेट कर पाऊं। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इन बिजनेसेस दैट हैव प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स या सर्विसेज देते हैं? क्विकली जो आप रन करते हो, you can write down yes I am there, or you can write down you can write down I am in product, so IP, I'm in project, IPRO, or IS, which is I'm in service. Okay, manufacturing. Okay, Mahendra, thank you very much. I products. Okay, Barkha, thank you. Srinivas is saying I'm in service. Okay, all right. Yes, I'm in product and service both. Product and service both. Service. Okay. Go ahead, keep going. Use products and service both in service, okay? Wonderful, very nice. We will get an opportunity to speak to each other. People, I think Sandeep is trying to raise his hand. Sandeep, you will get chance and we will have an interaction about this. But today, thank you very much. Aarti Agnihotri says she's in product and service, okay? So any product, see if you could do this right away. How many of you have a pen and paper in your hand right now? Pen and paper in the hand? Okay, pen and paper. अगर pen and paper नहीं है तो मैं जो भी कुछ स्क्रीन पे करूंगा
उसे आप प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए. It will help you. Thank you, Dr. Mohammed. You are with pen and paper. Vijayashri, thank you very much. Naga, you with pen and paper. Thank you very much. Always remember, whatever SIL University or SIL brings to you in webinars, there will be meaningful content into it. So if you can make a note of those content by having a piece of paper, it will definitely help you. आपको जरूर मदद करेगा. So let's begin our journey. हम एक सवाल है जो सबसे पूछना चाहता हूं. हम प्रोडक्ट बनाते क्यों हैं? हम प्रोडक्ट बनाते क्यों हैं? Okay, why do we make products or services? Okay, go ahead. Help users, customer needs. Okay, all right. Okay, quick, faster, market requirement. Okay, solve problems. Naga says solve problems. Okay, products versus solution people problem. Okay, to give them enhanced user engagement. Okay, solve a problem. Okay, sell to use. Okay, to answer clients' pain problems. Okay, better solution. Okay, all right. So the right answer is I create a solution for a problem, which means the core purpose why your business exists or why your product exists is because your product or your service has the ability to solve a problem. Okay, so make sure that you get this. Okay, now अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस में एक एबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, which means my product success is directly proportional to the amount of pain that the customer has, the quantity of pain that the customer has. Okay, I'll give you a quick answer, time for this to write it down. My product success is directly proportional to the problem that I'm solving, the importance of problem that I'm solving. I'll give you a classic example of this. Classic example. आप अगर देखोगे तो एक प्लास्टिक होता है, एक प्लास्टिक से हम शायद वो क्लिप बनाते हैं, प्लास्टिक का एक क्लिप बनाते हैं. Okay, now that clip is also made up of plastic, maybe a different kind of a plastic, and the tube that goes through your nose to your heart when the bypass happens, that is also rubber or plastic combination, some chemical combination. Now if you really notice, मैं अपने क्लाइंट के कौन से वैल्यू चेन पे बैठा हूं, इससे डिफाइन हो रहा है वो प्रोडक्ट की का इंपॉर्टेंस, मार्केट में प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस. ओके, सो वेदर इट इज अ प्लास्टिक क्लिप or whether it is the cathedral tube that you are trying to make, okay, both probably require similar amount of quantity of raw material. Quantity की बात कर, okay, not the quality, or the combinations might change. It will also require some amount of money. It will also require some amount of expertise. It will require some amount of right processing. It will amount the right customers to be found out. But important for us to notice here is कि मेरा product उतना ही चलेगा जितनी डेप्थ में मेरे कस्टमर की जरूरत है. अगर मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू पे बहुत ही अच्छी तरीके से बैठते हैं, then my products are going to be successful. अब कुछ बड़ी कंपनियों ने या जो कंपनियों ने किया है वो बड़ी बन चुकी है. This is how we can actually narrate the point. Let's pick up a company like Uber. Let's pick up a company like Swiggy. Let's pick up a company, ये तो अभी मॉडर्न कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ. ओके, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मास पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया. सो सेकंड एलिमेंट आ जाता है. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन नाउ टू एवरीबॉडी. सेकंड एलिमेंट आ जाता है. तो पहला एलिमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. पहला स्टेटमेंट है द penetration of my product is directly proportionate pardon my spelling please, directly proportionate to
customer need and his life cycle usage. ओके, लाइफ साइकिल यूसेज। अब आप खुद से ये पूछिए कि आपके पास क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर की लाइफ साइकिल यूसेज में उसको बार बार लगते हैं। सो जब प्रोडक्ट बनाओगे तो उसे बार बार लगने वाले प्रोडक्ट्स जब आप बनाते हैं, अगर मैं प्रोजेक्ट बिजनेस में हूं तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में हाथ डालता हूं, ऐसी टेक्नोलॉजी में हाथ डालता हूं जो कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू में उसे बार बार लगने वाले हैं। जैसे क्या, जैसे हो सकता है कूलिंग टावर्स का मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं इथेनॉल के प्लांट बनाता हूँ, मैं किचन्स बना देता हूँ, मैं सोलर सिस्टम्स के प्रोजेक्ट्स करता हूँ। सो इट डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस और व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर, बट जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है उसके पेन के साथ उतना आपके प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। ओके, सो ये पहला पॉइंट समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या था मैंने बताया आपको? दूसरा पॉइंट ये था that while I am planning my product planning के वक्त पे कस्टमर पर्सोना को ध्यान में रखिए। ओके, कस्टमर पर्सोना को ध्यान में रखिए। व्हाट डू वी मीन बाय कस्टमर पर्सोना? कि वो दिखता कैसे है, वो खाता क्या है, वो रहता कहाँ है, वो कौन सी तरीके की लोगों में बैठता उठता है, वो कौन से सोशल मीडिया पे जाता है, उसके पास ईमेल आईडीज कौन से हैं, उसके पास फैमिली में लोग कितने हैं, वो किस तरीके की लाइकिंग रखता है, वो किस तरीके की डिसलाइकिंग रखता है। अब ये क्यों जरूरी है? प्रोडक्ट पर्सोना या कस्टमर पर्सोना बहुत ही जरूरी है जब प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने का टाइम आता है। जैसे मैंने एक बढ़िया सा प्रोडक्ट बना दिया, अब प्रोडक्ट की कुछ खासियत होती है, राइट? आप प्रोडक्ट की खासियत को देखिए। इट हैज टू बी फास्टर, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, फास्टर, better, easier and cheaper. Faster, better, easier and cheaper. अगर मैं प्रोडक्ट ऐसा बनाता हूं, पहले तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि कस्टमर की लाइफ साइकिल में कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने वो प्रोडक्ट बनाते वक्त ये ध्यान में रखा कि वो मैं पहले से जल्दी बनाऊं। मार्केट में जितने, समझो मार्केट में वही प्रोडक्ट 10 दिन में आता है, तो मैं 7 दिन में कैसे बनाऊं। बेटर मतलब मार्केट का जो प्रोडक्ट है या अभी जो आप बेच रहे हो उससे मैं बेहतर कैसे कैसे दिखा सकता हूँ। इजियर कैसे बना सकता हूँ कि कस्टमर इसको सही तरीके से एक्सेस करे, राइट? जैसे पार्ले का बिस्किट का पैकेट हो या मारीगोल्ड का बिस्किट का पैकेट हो, वो इजीली अवेलेबल है, इजी है एक्सेस। वो मॉल्स में अवेलेबल है, पान की टपरी में अवेलेबल है, वो अवेलेबल है यू नो दी स्मॉल मॉल्स और स्मॉल फूड स्टोर्स, हर जगह अवेलेबिलिटी है, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है। अब कौन जाके ऑनलाइन यू नो अमेजोन पे जाके पार्ले का बिस्किट खरीदेगा? बट फिर भी अवेलेबल है ताकि कस्टमर को जब चाहे तब आसानी हो कि वो खरीद पाए। एंड लास्ट ऑफ कोर्स इज द प्राइस, और प्राइस जो है वो मास अफोर्डेबिलिटी की होनी चाहिए। सो कस्टमर पर्सोना ये आपको मदद करेगा ये 4 चीजें करने के लिए। ओके, कस्टमर पर्सोना ये आपको मदद करेगा 4 चीजें करने के लिए। सो I hope all of us are in sync. Give me a thumbs up if you're understanding what I'm saying. Point, because I'm going to go very slow. I'm going to only tell you 3 things today. Only 3 things when you want to drive your product. Okay, 3 things. So उसके पहले उन 3 चीजों के पहला सेट पे मैं बात कर रहा हूं अभी. That is, penetration of my product is directly proportionate to the customer needs and the life cycle usage. If I make a product that is faster, better, cheaper, and easier, it will have a better penetration. Write on your chat box that you okay, I am understanding this, sir, that this is how I need to make it. Okay, please, I'm waiting for that because ये digitally पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप उसे रिस्पॉन्ड करें तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, अब सवाल आता है कि सर अगले 365 दिन में मैं ऐसे प्रोडक्ट्स कैसे बनाऊं? अब शायद आपको कोई R&D करनी पड़ेगी, शायद आपको कुछ ट्रायल्स करने पड़ेंगे, शायद आपको कोई मशीन लगेगी उस चीज के लिए, शायद आपको एक स्पेशलाइज स्किल लगेगी उस चीज के लिए, शायद आपको उसके लिए स्पेशलाइज प्रोसेस लिखना पड़ेगा, शायद स्पेशलाइज रॉ मटेरियल लगेगा। अब ये जो चीजें हैं, मैन, मशीन, मेथड, मेजरमेंट, मदर नेचर, ये सारी चीजें उस प्रोडक्ट बनाने में जाएगी।
अब वो प्रोडक्ट बनाने में अगर ये सारी चीजें जाने वाली है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट अ बजट आउट ऑफ दैट, कि भाई 10 लाख रुपए में ये प्रोडक्ट तैयार हो जाना चाहिए, 5 लाख रुपए में ये प्रोडक्ट हो जाना चाहिए, और आप उसी तरीके के रिसोर्सेस उस प्रोडक्ट के पीछे लगाते हो, उसी तरीके की प्रोसेसेस आप उस प्रोडक्ट, एंड हेंस बजटिंग becomes a very important and an important ingredient of success. Budget becomes a very important ingredient of the success, क्योंकि जब तक आपका दिमाग एक्सेल शीट पे नहीं आता, तब तक शायद वो प्रोडक्ट को डेवलप तो कर दोगे, बट एक्सपेंसिव हो जाता है. How many of you agree कि sir we have made good products but they have become expensive? Please write it down on a chat box. Write it down. Yes, I am. They have become expensive. उसकी कॉस्ट हम कवर नहीं कर पाते और इस वजह से शायद हम मार्केट में सस्ते नहीं दे पाते, या मार्केट जिस रेट से चाहता है वो दे नहीं पाते. राइट इट आउट क्विकली on your chat box, quickly. Now, why is this happening, my friends? This is happening because I have not done my product budgeting very well. My product का innovation, उसका improvement का budget जो होता है, because ये पूरा R&D का budget है, ये R&D के budget में जाना चाहिए. ओके ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी में इसका एक डिपार्टमेंट होता है जो हम क्रिएट कर सकते हैं. इट डजंट मैटर कि आप कितने छोटे हो, आप 4 करोड़ 5 करोड़ कर रहे हो या 50 करोड़ कर रहे हो, इट डजंट मैटर. यू कैन अलोकेट रिसोर्सेस. अब रिसोर्स पैसे के टाइम शक्ल में आता है, टाइम की शक्ल में आता है, स्किल के शक्ल में आता है. ये रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज आप डिप्लॉय कर सकते हो अपने नए प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं कि अगर नए नए प्रोडक्ट्स हम मार्केट में नहीं लाएंगे तो हम अपनी कॉम्पिटिटिव एज छूट जाता है. How many of you agree that we lose our competitive edge if we don't get a new product in the market? Go ahead, say yes. I'm waiting for people to say yes. Go ahead quickly, and I want everybody to contribute. सिर्फ 5-6 लोग contribute करके मजा नहीं आता ना. अगर मैं आपको ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद आपको सही लग रही है, तो प्लीज राइट डाउन एंड रिस्पॉन्ड. राइट, सो फंडामेंटली क्या है कि you lose the competitive edge if you are not able to create new products on regular basis. Okay, point number 1. अब इसके लिए प्रोडक्ट बनाते वक्त सबसे पहली चीज क्या देखनी है? सबसे पहली चीज कि मैं प्रोडक्ट किसके लिए बना रहा हूं. Not because product I'm making products because I know about it. You should ask a question, whose problem is it solving? सवाल क्या पूछना है? Whose problem is it solving? Now, when you ask this question, ये किसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तब आता है ये सिलसिला जहां पे मुझे कस्टमर का पर्सोना लिखना पड़ता है. ओके, कस्टमर का पर्सोना, एक इंडिविजुअल कस्टमर का पर्सोना, उसकी लाइकिंग्स, उसकी डिसलाइकिंग्स, उसकी एज, उसकी सेक्सुअल प्रायोरिटीज, उसकी टेरिटरी, उसकी मेच्योरिटी, उसकी एजुकेशन लेवल्स, वो उसकी सोशल मीडिया के सारा छानबान, ये सब समझ के आप एक पर्सोना बनाते हो. ओके, और मैं आपको कुछ अभी दिखाने वाला हूं. जस्ट टेल मी कितने लोग इस पर्सोना में फिट होते हैं. गिव मी अ मोमेंट. हमने एसआईएल के कस्टमर्स का पर्सोना बनाया हुआ है. ओके, व्हाई? टू गिव यू एन एग्जांपल कि यार ये देखिए इस तरीके से बनता है. सो मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूं इसे. जस्ट गिव मी 30 मोर सेकेंड्स एंड आई विल डू दैट विद यू. ओके, 30 मोर सेकेंड्स. Okay, give me a moment. Here you go. You have it. Yeah. You have my slide that's coming on your way. Give me a moment. ये पैरामीटर्स आप ध्यान में रखें, और इट डजंट मैटर वेदर आई एम सेलिंग ट्रेनिंग or you are selling a project. It does not matter whether we are a consulting company or you are a manufacturing. हर क्लाइंट का एक पर्सोना होता है. जैसे अगर मैं ऑटोमोटिव के सेक्टर में हूं और मैं ऑटोमोटिव के पार्ट्स बेच रहा हूं,
तो कस्टमर, मेरा नेचुरल कस्टमर कौन है? ऑटोमोटिव की कंपनियां। अब ऑटोमोटिव की कंपनियां ये तो सबको पता है, पर कौन सी ऑटोमोटिव की कौन सी कंपनी, उसका कौन सा परचेस मैनेजर या प्लांट हेड या सीईओ आपके प्रोडक्ट के प्रति लाइकिंग दिखाएगा, ये बहुत जरूरी है। वरना हम हंटिंग में इतना टाइम बिता देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ओके, सो कस्टमर का पर्सोना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा कि आप उसको क्या बेचोगे और कितना बेचोगे। Okay, let's understand this. What have I written? Let's look at this persona, and I've given a typical customer profiling of SL. Okay, range 35 to 35, middle class family, 4 to 6, probably family members, manufacturing service business में 5 से 100 लोग हैं उनके पास। गाड़ियां चलाते हैं, सेडान या एसयूवी ओनर, मेंबरशिप होती है इनकी रोटरी में, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जनरली एक स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन चाहते हैं अपने आप बिजनेस में आए, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, पुराने दोस्तों के साथ इनको घुलना मिलना, प्राउड की अपने नेशन की हिस्ट्री में, जनरली लिसन्स एंड वॉचेस टू यूट्यूब, मैनेजिंग टीम, सेविंग मनी, रियल एस्टेट, अकाउंटिंग, प्रीफर्स हिंदी चैनल्स और रीजनल चैनल्स मोर देन इंग्लिश चैनल्स। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेड क्या है? देखो, वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली नो हाउ ऑफ द प्रोडक्ट, बिजनेस टेन्योर लगभग 5 से 10-25 साल का है, रेजिलेंट है, अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं जिंदगी में, ड्रीम्स ऑफ मेकिंग, मेरा धंधा बड़ा करूं मैं, ऑलवेज ऑन अ लुकआउट ऑफ फ्रेंड्स, कोचेस, गाइड्स, मेंटोर्स, कंसल्टेंट्स हु कैन गाइड देम टू रियलाइज their dreams. Not so positive traits, lack of any kind of business education, right? बिजनेस एजुकेशन को हम सीरियसली नहीं लेते, लैक ऑफ एक्सपोजर टू मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस। जैसे ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज है, पर शायद हमने कभी इंप्लीमेंट नहीं करी हमारे बिजनेस में। प्रिफर्स बिजनेस एजुकेशन टू बी एक्सपेंसिव, राइट? एक परसेप्शन है ऐसे लोगों का कि बिजनेस एजुकेशन ये एक्सपेंसिव होता है। लॉस ऑफ कंट्रोल, की धंधे का कंट्रोल चला जाता है अगर मैं बहुत ज्यादा डेलीगेट कर देता हूँ। पास्ट फेलियर्स एंड अबाउ फियर्स have scared him to scale up and values loyalty more than competence. आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे बताइए कितने लोग यहाँ पे इस पर्सोना में फिट होते हैं? जल्दी quickly. I think Dr. Mohammed has already said I am fitting exactly 100% into it. Please write down quickly that you're fitting into this persona. Quickly write down that you're fitting into this persona on some levels. 70-80% sir, मैं fit हो रहा हूँ। Go ahead, quickly keep writing it down. Waiting for all of you. Keep writing it down. Wait. So if you really notice, अब मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरी संस्था के लिए अब आसान हो जाता है कि हम किस तरीके के कस्टमर्स के साथ बात करेंगे और अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। अगर इसके बाहर है तो हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे टाइम, इट इज वेस्टेज ऑफ आवर टाइम एंड द अदर पर्सन्स टाइम। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माय कस्टमर पर्सोना। मैं आपको और एक लेवल पे आगे लेके जाता हूँ। ओके, और एक लेवल इसकी आगे है कि हम लोग in SIL we've gone that deep. We also teach how to do that to all our participants during any other sessions or RM for that matter. Okay, challenges क्या होते हैं? Disturbed cash flow, lack of the team, lack of vision, aggressive demands on pricing, quality, delivery and payment schedules, challenges on family fronts, guilt of not spending time with family members, health issues that he often suppresses, aspiration of family members, challenges in parenting, kids in the family may have challenges of education and career choices, disturbing demons of generation gap, जिसमें दो भाई काम कर रहे हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चे और पापा काम कर रहे हैं या माँ काम कर रही है। Couples are not getting together. The entrepreneur faces a lot of issues because he has to hustle a lot. So couples are planning for separations. Women might get wanted. The woman in the business would want to be independent of everything. Elders in the family are maybe struggling of how to live their life post retirement. So if you see, please tell me now how many of you are fitting here. Harak, I doubt you could get the PPT, but I recommend you to click a snapshot. Okay, click a snapshot. Okay, now see, I want you to understand कितना आसान हो जाएगा या कितनी सटीक तरीका होगा कि मेरे बंदे, मेरे टीम, मेरी पूरी कंपनी बस इन लोगों को केटर करे।
या इन जैसे लोगों को केटर करें. नाउ हाउ मच रिसोर्सेज एम आई सेविंग? ओके, नाउ हमारे सारे प्रोडक्ट्स भी इसके इर्द गिर्द ही होंगे, इसीलिए कस्टमर का पर्सोना होना जरूरी है. इसीलिए मैं किसको बेचने वाला हूं और वो कैसे दिखता है, ये बहुत जरूरी है. Okay, ये बहुत जरूरी है. How many of you liked what I've shared right now with you? Please give me a cheers on the chat box. That okay? Give me a thumbs up if you really liked it. Give me a thumbs down if you've not liked it. Go ahead, thumbs up for if you've liked it. And the number of thumbs ups will tell me if you've liked it more. Huh? The number of thumbs ups. Okay, go ahead. Let's try this. Have fun. Go ahead. Waiting for you. So now if you really see what is happening while we are trying to build our company, we forget these softer elements of business. We forget these softer elements, जिसके वजह से मैं मार्केट में जाने की जो accuracy है, वो accuracy मिस कर देता हूँ, and I lose a lot of time. So what do I do in Aram? I'll tell you during my session. I help you with these tools. मैं ये tools आपको P sessions में दे दूंगा ताकि आप उस पे सोचना शुरू करें. And while you build your budget is तो Excel sheet वाला activity, but strategically you are brainstorming with us to build that. There are 3 batches that have been formed. The first batch is starting today digitally. 19-20 को हम सारे physically मिल रहे हैं फरवरी के, but today एक महीने पहले ये सारा काम शुरू हो रहा है लोगों के साथ. My strong recommendation, people who are thinking यार करूं नहीं करूं, कैसे करूं, क्या होगा, my only recommendation here is you will have to, if you feel that we are genuine people, we have been there in the market for the last 10 years now. We've grown as an organization. Over 24,000 people been trained, around 1,000 plus projects been completed. I think we have enough and more evidence that we can do the job. Okay, so my humble request to you here is अगर आप और मैं खाना खाने जाते हैं फैमिली के साथ, तो जितना बिल होता है ना उतना ही बिल हम आपसे आपके बजट बनाने का ले रहे हैं. So my humble request to all of you here is please make sure, if you're not certain about it, you trust is a good way to start. Point number 1. And point number 2, there is evidence. There is a lot of evidence, okay, that you can pick up. So I'll move on to the next point now. So in the first section, I said that this is my first section. Let's look at section number 2. Section number 2 is talking on my existing products. Okay, section number 2 is talking on my existing products. Anybody who would want to have an interaction with me, anybody who would want to have an interaction, raise your hands quickly. Raise your hands quickly. I would let's have an interaction quickly with each other. And you tell me, okay, sir, I want to have interaction with you because I'm going to do a small case with you. Okay, raise your hands quickly. I want to see the number of people coming up. Okay, Dr. Mohammed has raised his hand, and Barka Tomar. So, okay, Dr. Mohammed, I will, I think from the timer point of view, Barka Tomar raised her hand. So, Barka, would you want to talk? And here you go. You are allowed to talk now. You can unmute yourself and start talking. Yes, sir. Good evening. Good evening. What kind of business are you in, Barka? Actually, we are manufacturing power supply. Wonderful. Power supply equipments for? No. It is for electronic security, surveillance, and industrial automation. Oh, wonderful. For power sector, is it? Yeah. Wonderful. Okay, let's do a quick analysis here. Can you tell me the number of products or processes or systems that you provide? Let's put a number. Let's give me the names quickly. I have to write in chat box? No. You just tell me. I'll write it for everybody. Everybody Okay. can see. We are near about 200 to 250 products. Okay, 200 and 250 products. Okay. Yeah. So we'll just write down 250 products. Now, what do you need to do, Barka, which part of the country you have joined us from? Nagpur, Maharashtra. Nagpur, Maharashtra. Okay. Yeah. Let's look at this. Now, what you need to do, Barka, is to
divide all your products into a 2x2 matrix. All your products. ये काम आपने बजटिंग से पहले करना चाहिए. इनफैक्ट नागपुर, अमरावती से बहुत लोग इस बार आरंभ में भी आ रहे हैं. You are definitely welcome. But let's look at this. ये 250 को मैं डिवाइड कौन से बेसिस पे करूंगा? So पहली चीज आपको जो करनी है यहाँ पे, हम कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट क्यों करते हैं? दो ही चीज के लिए. एक, I need to put in some effort and I need to get value. Am I correct? Yes. मैं एफर्ट डालती हूँ और मुझे वैल्यू मिलता है. Value मिलेगा. You are with me? Yes. Okay, let's look at this. Now अगर मैं 2x2 के मैट्रिक्स में डालता हूँ तो यहाँ पे लो एफर्ट लो वैल्यू आ जाता है. Yes. यहाँ पे हाई एफर्ट High value. लो वैल्यू आ जाता है. Low value. यहाँ पे आ जाता है हाई एफर्ट हाई वैल्यू, और यहाँ पे आ जाता है हाई वैल्यू लो एफर्ट. ओके, अगर आप इन चारों बॉक्सेस में अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट डाउन करते हैं, और सिंपल लॉजिक है, लो एफर्ट लो वैल्यू, पैसा भी कम मिल रहा है, एफर्ट भी कम जा रहा है. हाई Yes. एफर्ट लो वैल्यू, मेहनत बहुत जा रही है, एफर्ट कम, वैल्यू नहीं मिल रही. Value. हाई एफर्ट हाई वैल्यू, पैसा भी मिलता है और एफर्ट भी जाता है. हाई वैल्यू लो एफर्ट, पैसा ज्यादा मिलता है, एफर्ट कम जाता है. आप अपने प्रोडक्ट्स कौन सी कैटेगरी में बिठाना चाहते हैं? गो अहेड. कहा, क्या लगता है बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कब होगा? High effort, high value. Are you sure? Think about this. Your business will grow and scale if you are sitting in quadrant number 4. If your products and services are sitting in quadrant number 4. Is that okay? यहाँ पे. This is the spot. Yes, high value, low. High effort, high value and low effort. अच्छा, फिर क्या करना पड़ेगा? तो लो एफर्ट लो वैल्यू 250 प्रोडक्ट्स में से मैं आपको लिख के देता हूं, कम से कम 25% ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो लो एफर्ट लो वैल्यू से. Yes. आप पहले उसको मार्केट से, अपने संस्था से बाहर निकालिए, ना बोलने का सिलसिला शुरू कीजिए. क्योंकि आपने अगर आप वेट बना के रखते हो अपनी बॉडी पे, तो यू कैन रन अ लॉन्ग मैराथन. डू यू एग्री? यस और नो? Yes, sir. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज, दिस इज वेट श्रेडिंग प्रोसेस. ये आपको आपकी पूरी सिस्टम से बाहर निकालना है. ओके, अच्छा, एक आध 2-4 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो आप कहते हो सर ये मेरी एंट्री पॉइंट है, इसके लिए हमने ये रखा हुआ है, पर 25% नहीं हो सकते, 1-2% हो सकते हैं. इज दैट ओके? Yes, sir. सो दैट्स पॉइंट नंबर 1. हाई वैल्यू लो एफर्ट, हाई एफर्ट लो वैल्यू. यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे करना है इनोवेशन. क्या वर्ड है? Innovation. इनोवेशन. आपको खुद से पूछना है, अपनी टीम से पूछना है, अपने कस्टमर से पूछना है कि सर मैं वैल्यू बढ़ाने के लिए इसमें क्या कर सकती हूँ. और देन यू हैव टू वर्क ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट आई स्पोक अबाउट, फास्टर बेटर चीपर एंड इजियर. अब जैसे ही ये इनोवेट हो जाता है, आप सक्सेसफुल हो जाता है आपका इनोवेशन, you will see value becoming more and effort going less. पर वो साइकिल के थ्रू जाएगा. साइकिल क्या है इसकी? ये साइकिल पहले यहां से इस बॉक्स में आएगी. अब क्या हो गया? अब हो गया हाई एफर्ट हाई वैल्यू. इसका मतलब क्या? मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है पर पैसा भी अच्छा बनता है. और एंटरप्रेन्योर्स यही पे गलतियां करते हैं अपने प्रोडक्ट में, और वहां पे वो स्टैंडर्डाइजेशन का गेम मिस कर देते हैं. नाउ दिस इज द प्लेस, अगर आपको ये समझ गया यार अपना प्रोडक्ट बिकता भी है, लोग मांगते हैं उस प्रोडक्ट को, पर उसकी वैल्यू भी ज्यादा है और एफर्ट भी मिलता है. दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू स्टार्ट अ वर्ड कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन. जैसे ही आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, और मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारा तो प्रोजेक्ट बेस्ड धंधा है, हम कस्टमाइज करके देते हैं, हम ये करके देते हैं, हम वो करके देते हैं. मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ कि आपका फेसबुक पेज, आपका फेसबुक पेज आपका खुद का कस्टमाइज्ड है ना? आप ही की चीजें दिखती है आपके फेसबुक पेज पे. डू यू एग्री? No. नहीं, आई एम सेइंग योर फेसबुक पेज इज योर फेसबुक पेज. नो, Yes.
right? It does not show my information on your Facebook page. So if Mark Zuckerberg can actually standardize the engineering behind to give you a unique experience, why is you and me not thinking about it? Is because we don't work on it. So जो भी चीज आपकी हाई एफर्ट हाई वैल्यू है, उसे स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप स्टैंडर्डाइज करोगे उसकी एफर्ट वैल्यू कम हो जाएगी. आर यू विथ मी ऑन दिस? उसकी एफर्ट कम हो जाएगा. जैसे ही एफर्ट कम होगा वैसे वो. So what is that you need to do? You need to block all your products into 4x4 matrix. High value, low effort, low value, low effort, high value, high effort, and high value, low effort. आप ये जैसे ही करते हो आपको ये समझ में आ जाएगा 250 में से शायद 25% प्रोडक्ट मेरी जरूरत ही नहीं. अब क्यों करना चाहिए ये बहुत जरूरी है. Why should I focus on doing this? I should focus on doing this is because my resources are limited, and you know, जैसे जैसे कबर्ड में एक लिमिटेड स्पेस है. आपको जितनी बार, साल में 1 बार, साल में 2 बार, आप जब तक पुराने कपड़े बाहर नहीं डालोगे तब तक आप नए कपड़े नहीं लोगे. और लोग फिर क्या करते हैं, कबर्ड बढ़ाने की कोशिश करते हैं. दैट्स अ रॉन्ग मेथड ऑफ बिजनेस. ओके, फर्स्ट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द करंट रिसोर्सेज दैट यू हैव. सो करंट रिसोर्सेज में आपकी प्रोडक्ट्स जो आपको वैल्यू नहीं दे रही हैं, आपको उनको धीरे धीरे बाहर निकालना होगा और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे, हाई वैल्यू सर्विसेज पे ध्यान देनी होगी तभी, और उसे स्टैंडर्डाइज करना होगा तभी जाके वैल्यू बनेगी. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक व्हाट आई शेयर्ड राइट नाउ? क्विकली लेट मी नो. Barka, did you like what I shared? Did you understand the way it has to be done? Yes, sir. Yes. Yeah? Please Yes, use got this. it. And while you build your budget, okay, it is very critical because आपकी resources, अगर अगर मैं assume कर रहा हूँ, अगर आपका turnover लगभग 15 करोड़ है, assume कर रहा हूँ, और उसमें से 25% contribution आपका इन प्रोडक्ट से आ रहा है. कौन से प्रोडक्ट? टॉप लाइन. बॉटम लाइन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लो एफर्ट लो वैल्यू आपको टॉप लाइन भी नहीं देंगे, बॉटम लाइन भी नहीं देंगे. अगर आपके पास वो टॉप लाइन है, अगर वो टॉप लाइन दे रही है, तो इन प्रोडक्ट्स को बाहर निकालिए. ये प्रोडक्ट्स आपके लिए उपयोग के नहीं है. Yes. उससे बेहतर ये है कि आप अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपने एम्प्लॉइज, अपना पैसा ऐसी जगह पे लगाओ जहां से वैल्यू तेजी से बाहर आएगी. इज दैट ओके? Yes, sir. Wonderful. So thank you very much, Vijaya. Thank you very much, Mukul. And now we will move. Thank you, Barka. You can. I'll mute you right now, and you can go back to the audience mode. Now I'm going to move to the third section of it. Third section. Now ये सवाल उनके लिए, ये सिस्टम उनके लिए है जो प्रोडक्ट अभी तैयार है. मैंने प्रोडक्ट बना दिया है. अब सर, I want to sell this product in the market. कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो मार्केट में ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं? मैंने प्रोडक्ट बना दिया है, अब मैं सेल करना चाहता हूँ, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ सर कि ये कितना बिकेगा, ये कितना मार्केट में पेनिट्रेट होगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. इसकी वजह से मैं मार्केटिंग में कितना खर्चा करूँ, मैं सेल्स के लोग कितने लगाऊं, मैं उसकी प्लांट मशीनरी में खर्चा करूँ या नहीं करूँ सर, या किस तरीके के लोग लगेंगे, कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग डेवलप करने में क्या करना पड़ेगा, ये मैं नहीं जानता. कितने लोग हैं यहाँ पे, बताइए प्लीज, क्विकली. Good. So there are people who are there, and now I'm going to share with you a simple concept of diffusion of innovation. Diffusion of innovation. Now, what do you mean by diffusion of innovation? The first thing that you would do is to make sure that you know what is the total universe of people that you have. Okay, I'm going to unmute Harak Soni. Harak, would you be able to speak? I'm asking my team to unmute it. Okay, Harak, you can speak now. आप सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी सर. हरक, आप कहाँ से ज्वाइन किया है आपने? मैंने जलगांव महाराष्ट्र से. जलगांव, very good. Harak, what kind of business are you in? We are into food processing. We are largely into contract manufacturing and private labeling of food products. We manufacture gulab jamun powder for Nilons, Gates, MTR and similar brands. क्या बात है. So you are all into food processing, food processing. Wonderful. Yes. So say assuming you are wanting to launch your own brand. ठीक है, हम ये करते हैं, गुलाब जामुन का हरक सोनी नाम का गुलाब जामुन आ रहा है, ऐसे हम ये करते हैं. पर
शायद शायद हर ये नहीं जानते कि ये कितना बिक पाएगा, ये मैं कौन से कस्टमर के पास लेके जाऊं, ये किस तरीके के कस्टमर के पास लेके जाऊं, कैसी मार्केटिंग करूं, कितना स्पेंड करूं, शायद ये नहीं जानते। सो एक थंब रूल है, जब आप ये यूज करते हो, ये मेथड यूज करते हो, दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। कोई भी प्रोडक्ट, ध्यान में रखिए हमेशा, कोई भी प्रोडक्ट, ये इसकी जर्नी क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन से शुरू होती है या इंस्पायर से शुरू होती है और नीड पे खत्म होती है, राइट? एस्पिरेशन शुरू होती है, आई यूज अ रॉन्ग वर्ड, एस्पिरेशन शुरू होती है और नीड पे खत्म होती है। अब एस्पिरेशन क्या है? जैसे जैसे किसी को गाड़ी का एस्पिरेशन है, किसी को घड़ी का एस्पिरेशन है, किसी को कपड़ों का एस्पिरेशन है, जो शायद बहुत बढ़िया कपड़े नहीं पहन पा रहा होगा, उसे उसे अच्छे कपड़े चाहिए। सो एस्पिरेशन से नीड की जर्नी होती है किसी भी प्रोडक्ट। अब अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आपका प्रोडक्ट भी इसी डिफ्यूजन से जाएगा। इस डिफ्यूजन में 5 कैटेगरीज होती है, 5 कैटेगरीज। व्हाट इज द फर्स्ट कैटेगरी? इट इज कॉल्ड इनोवेटर्स। सेकेंड कैटेगरी है, मैं इसको समझा दूंगा बाद में हरक आपको या सबको, बट वी विल सी दिस। इनोवेटर्स, देन देयर आर अर्ली अडॉप्टर्स। फिर तीसरी कैटेगरी है अर्ली मेजॉरिटी। फिर चौथी है लेट मेजॉरिटी और पांचवी है लैगर्स। ओके, नाउ आप ही के इंडस्ट्री से देखते हैं, क्या आपने देखा है 1 रुपए के कॉफी के पाउच भी आते हैं? फर्क या 1 रुपए के कॉफी के पाउच? यस सर। और 500 रुपए का कॉफी का मग भी आता है, या कॉफी का जार भी आता है, या 750 रुपए का आता है। बेसिक कॉफी बेचते हैं। नाउ इफ यू रियली नोटिस, वो 1 रुपए वाला आदमी वर्सेस 750 वाला आदमी अलग है। डू यू एग्री? Yeah, correct. So based on my customer interest, based on my his needs and aspiration, मेरा प्रोडक्ट की मूवमेंट होगी। सो अर्ली इनोवेटर्स वो होते हैं जो नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं। ये लगभग 8% मार्केट है आपका। कितना? 8% मार्केट। जैसे अगर आप गुलाब जामुन बेचोगे तो आप देखोगे कि जो फिटनेस वाले लोग हैं ना, फिटनेस फ्रीक लोग हैं, ये लोग शायद आपका प्रोडक्ट अभी नहीं यूज करेंगे। Perfect. अगर आप ऐसा प्रोडक्ट लाते हो जो आप बोलते हो शुगर फ्री है और एब्सोल्युटली हाइजीनिक है, तो शायद वो फिटनेस वाले लोग पहले आ जाएंगे। हाँ, ओके, सही। आपके इनोवेटर कौन होंगे? वो जिनको मीठा पसंद है। तो मीठा पसंद वाले लोग होते, ये पहला सवाल। उसके बेसिस पे मेरी प्रोडक्ट की डिप्लॉयमेंट। अच्छा, जैसे ही वो मीठा पसंद लोग जहां पे रहते हैं वहां पे प्रोडक्ट की डिप्लॉय कर ली, जैसे उन्होंने खाया और उनको अच्छा लगा ना, तो वो दूसरे को बताएंगे, यार मैंने अच्छा, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तो एक काम कर, इसका ले ले। तो सोनी की गुलाब जामुन लो, अच्छे गुलाब जामुन होते हैं। ये जो रेफरेंस से आते हैं, इनको अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं। ये लगभग 12% होते हैं। सो पहला काम क्या है प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त, कि मैं अपने मार्केट साइज का 20% कैसे एक्वायर करूं। ओके, नाउ बिकॉज ये कोई इनोवेशन तो है नहीं, गुलाब जामुन तो पहले भी बिकता है इसमें पैकेट में। तो अलग दूसरा एक तरीका है कि कंपटीशन बेंचमार्किंग। कंपटीशन बेंचमार्किंग का मतलब क्या है कि इटमी, हल्दीराम, और कौन कौन है आपके उसी इसमें, Picano, Bikaji. एब्सोल्युटली, बिकाजी, ऑल ऑफ दैट, ये कितना बेच रहे हैं, और उसके बेसिस पे मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटेजी लाऊंगा। उसके बेसिस पे मेरी एडवर्टीजमेंट होगी, उसके बेसिस पे मेरी टीम सेट होगी, उसके बेसिस पे मेरी दुकानें, मेरी टेरिटरी, मेरी पैकेजिंग, मेरी इंसेंटिव स्कीम, उसके बेसिस पे डरता है। सो अगर नया प्रोडक्ट है, पूरा नया प्रोडक्ट है, अब तक आया ही नहीं है, तब इस मेथड को यूज करिए। अगर पुराना मेथड नहीं है, पुराना प्रोडक्ट, सॉरी, नया प्रोडक्ट नहीं है,
आपने वो प्रोडक्ट बना रहे हो जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, तो कंपटीशन बेंचमार्किंग करके ये इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स ढूंढिए। अगर ये आप ढूंढ पाते हो तो आपकी प्रोडक्ट लॉन्च सक्सेसफुल होना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, क्योंकि आप अभी मार्केट को कितने केटर कर रहे हो? आप बोलोगे पहले 1 साल में मैं बस मेरे 8% मार्केट को केटर करूंगा, पहले साल में मैं इतना ही करूंगा। तो इसी का तो बजट चाहिए, इसके लोग चाहिए, इसी की टेरिटरी चाहिए, इसी का पैकेजिंग चाहिए, इसी का सप्लाई चेन चाहिए। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड अ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी इनटू योर। अब ये अगर 8% मार्केट यूनिवर्स को केटर करना है, 8% मतलब हम कोशिश करके देखते हैं, 8% मतलब 100 लोग हैं, ऐसा हम अभी एग्जाम्पल। तो मेरा काम क्या है, मेरे प्रोडक्ट का काम क्या है पहले साल, कि 100 लोगों तक पहुंचना, ये पहला काम। पहुंचूंगा, दिखेगा तो बिकेगा। सो वो पहुंचने के लिए जो पैसा चाहिए वो मेरे बजटिंग में आता है। इज दैट ओके? उसी को मैं मंथ वाइज, डे वाइज, एक्टिविटी वाइज, पीपल वाइज ब्रेकअप देता हूं, तो मेरा मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं और मंथली ऑपरेटिंग सेल्स आ जाता है। इससे मेरे को पता चलता है मेरी प्रोडक्ट की मूवमेंट कैसी हो रही है, और मैं स्पाइक्स का धंधा छोड़ के मैं सटीक ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ना शुरू करता हूं। इज दैट ओके सोनी साहब? Yeah, perfect, sir. Perfect. Yeah, is that making sense to you? Yeah, it is absolutely making sense. Wonderful. So I'm sure that अगर आप OEM कर रहे हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, दिल में एक हमेशा से कितने दिनों से है कि यार मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ? Sir, to be honest, होता क्या है ना, it becomes more like you are in the same vicinity, you are in the same domain, so it's more like आप एक दूसरे की टेरिटरी स्नैच करोगे। तो कहीं ना कहीं वो होता है कि brands want to sneak out of the companies who wants to come into the same domain. So हमारे लिए ये वो होता है कि हम एक्सपोर्ट कर ले, वो ठीक रहेगा, पर हम डोमेस्टिक मार्केट ना करें। Okay, so just ask this question to yourself. Ask this question. So isn't this a operating decision? This is a strategic decision. Because that's exactly what my next discussion of topic is. The decision that the business is taking, that you will go to our exports, but you will not do domestic market. Is this an operating decision or a strategic decision? To be honest, it's a long-term strategy of the company, so that company should actually survive also with the domestic revenues, and export is something cherry on the cake. Okay, so typically this kind, how long you've been doing the contract manufacturing? So it's a decade long. 15 years we had already completed. क्या बात है, बढ़िया. Which means you are in business for a good amount of time now. Yeah. Yeah. All right. अगर आप अभी 15 साल के बाद भी, if the OEM is able to convince you that why would we snatch each other's market, we should not snatch each other's market. आपको भी मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है, करते हैं, बराबर है? हाँ. Is that correct what I'm saying? Yeah, it's correct. My question to you here is, till the time you have great relationships with the OEM, this game will work fine. A company will grow if it has its consumers. I'll repeat what I'm saying for everybody. A company will scale up or grow if it has its own consumers. Okay. Now, Harakji, focus on building consumers after 15 years in business. Focus on. It is not about turnovers. Please realize. Right now, probably it might contribute to 2% of your entire top line. But 2% will give you a compounding effect in the next 15-20 years. I mean, forget about 15-20 years. If you really plan it well, it can happen in 5-7 years. Oh. Okay. Because the brand value, then the bankers see you in a different form. Your investors see you in a different form. The level of employees that come to you, they are in a different form. All of that is different, please realize. Okay. So slowly but steadily, and I'm 100% sure, even if you are able to convince you will be able to convince, if you are convinced, that it is important for an organization to acquire consumers. Okay. Now, that's my recommendation to everybody, because we will not grow from an SME to a ME
to a large corporate if we don't have consumers. Are you with me? Yes, yes, Okay. absolutely. And the growth is what you want now. Fundamentally, why did you start the business? For two reasons. One is growth and second is happiness. True. Is there anything else that you want? So if you intend to grow your business and you have established yourself as a good OEM supplier, now it is important for you to start. Now, this is where the innovation piece will start off. You need to have a long-term strategy to look at it so that you are able to build your relations right now also. And in domestic and international, you're trying to bring your product. Are you with me? Yeah, absolutely. Wonderful. Thank you very much. I hope, Thank you. thank you, Ms. Soni. I hope I've been able to add value to your time. I hope I've been able to share a lot of elements of product creation and how it impacts our overall business. Now that we are coming to the end of the webinar, I would want people to ask me questions. If you have questions, my team will unmute you and we can start off. Go ahead. If you have questions, please go ahead. You can write the question on. Ashish has question. Thank you. Ashish, go ahead. You can Dr. Mohammed, go ahead. You can ask a question if you have. Sir, I am Dr. Zarina Mohammed from Andhra Pradesh, Kakinada. I am a beauty consultant, a service provider, and a trainer also. So having 3 decades of experience, I want to enter into academy, beauty university, like how you are training entrepreneurs in your university. I want to have a university of my own. A part of that, which I also want to empower women, because beauty industry has a lot of scope. It has beauty, it has hair, it has makeup, it has alternative therapies, spa therapies. There are so many branches in this, and I am qualified, internationally qualified, and I can train people across the globe. So how to take my knowledge, this knowledge, in the form of like teachings, and how to connect with people across the globe. That is my biggest question right now. I have all the syllabus which I have done. I myself wrote the projects. Like once I complete the exam, I have to submit a project on that particular subject, like aromatherapy or makeup and all. So how to go ahead with this, and where SIL can help me in this particular aspect. My product is education. Okay, wonderful. Very nice. So can SIL help you? The answer is yes. Second, are you being backed by finances or are you doing it by yourself? So far, it's my own business. I have no clue about finances. I'm scared of taking loans. As you have mentioned, like because of my previous failures or whatever it is, I'm scared. I'm scared to scale up. One thing is there is no backup support for me because I'm the first entrepreneur in my family. No one has so far done any kind of business. So I have no clue about how to take a business to the next level. For so many years, I was a true professional, taking care of children, family, and my own upgradation of qualifications and all. Right now, I am in a position where I'm the president for Association of Beauty Therapists and Cosmetologists, Andhra Pradesh. And I was given scholarship by ISB, Indian School of Business, through Goldman Sachs program. Sorry, I was also given a scholarship by L'Oreal to study their entire education free. All these affiliations, accreditations, awards, I have qualifications not less than 150 certificates and all that. But from here, how to go about it? I have my 2 daughters supporting me. They are also equally qualified. But I'm not able to take a step ahead because of maybe my belief systems or whatever I have encountered in my previous journey. So that is why I'm here, sir. No problem. No problem. It's okay. It's okay. It's a pleasure to meet you, first of all. Second,
please start. Do you have any web presence? Yes, sir. I have website www.meenabeautyclinics.com. So you first start with an education free YouTube channel for everybody. Okay. And then start building it up, because the resources are the crunch. Use all the free resources that are available. All the free resources. Okay. So while we don't work with startups as such. We work with startups who have got financed or established businesses. So that's what we work as a university. But what I will recommend you to is log on to siluniversity.com. Okay. And there are two journeys there. One is called Burning Desire and second is Magnet. Okay. One is called Burning Desire and second is called Sales Magnet. Both these training programs will help you. One is to establish your vision and create a right roadmap, and second to sell that. Is that okay with you? Yes, sir. I'll go through it. Yeah. Thank you so much. You please go through both the journeys. There are free power sessions. Go through the power sessions. No problems. Thank you, sir. Thank you so much. Wonderful. Thank you. Anybody has any other question? More than happy to answer those questions. But before we move forward, rather, how many of you are interested in knowing what Aarambh is and what are we going to do in Aarambh and all the detailings of Aarambh? Go ahead. Write down on your chat boxes. Go ahead. On your chat box now. I'm waiting for people to respond. People who will respond, I will talk to them. Question here is, my question is, how many of you would want to know what happens in the annual operating plan, the physical session that we're going to do on 19th and 20th, 19th and 20th, okay, of February in Pune? How many of you would want to know what is going to happen there? Now, first of all, just realize annual operating plan is a yearly activity that SIL does every year on 19th and 20th of February. Okay. So I'm going to share this with you. Have a look at this. It is a cumulative budget of over 7,500 crores that we will create. According to the research that we did along with Forbes, what we found out was these are the top 10 reasons why businesses fail. One is planning on gut. The first is planning on gut. And after doing this research, we established a curriculum of creating a budget, and that's called Aarambh. Aarambh, why does it happen on 19th? It starts on 19th because it is also the birthday of birth anniversary of Raja Shiv Chhatrapati, and he was one of the icons of the country. What are we going to do there? 2 days intense workshop on annual budgeting, annual growth budgeting. Top 10 experts who have built companies up to 1,000, 2,000, 3,000 crores. These people will be helping us and guiding us in doing and building up our budget. Over 50 professional CAs, CMAs, and financial experts will be there to help us fill the exercise and Excel sheet. Customized budget template. I'll just share that template with you right away. Okay, so I'll share that template. Give me a moment. Now, if you see, entire workshop filling online, the online piece starts today, and you can be a part of this. It will be repeated till 19th so that people can fill the document. Budget query events, predefined appointments with potential vendors and customers, get access to coaches and consultants directly to advise your company, get inspired and through live case studies of 10x growth, and I'm going to share that with you of what it is.
Okay, and join the community. Basically, you'll be a part of the community of SIL University. These are the last year's snippet that we did. Around 200 businesses participated in it. This time, what we're going to do is Inspiring India Movement Awards. Inspiring India Awards are going to be declared. There are 9 businesses who have crossed 100 crores with us. Those businesses are going on Z Business in an interview. Around 500 MSMEs are coming together to make this, and the entire second day is going to be published on Z Business. So on the news channel. Who all is involved? I'm there. Dr. Akshay Seth, who will be talking about revenues and how to create revenues. Then, of course, Shrikant Pangarkar, who's going to talk about operational excellence. Dr. Kalindi Kale, CA Kalyan Jagnani, Raman Nanda, Mr. Madan Bajpai, Nitin Mahadik, Shirish Gude, Vinit Dev, and Shiv Kumar. All of these gentlemen and ladies are going to focus on various aspects of budget. Now I'm going to share with you what are the various aspects of budget. This is the event flow. My team will send you the event flow if you're interested. And that's how the entire program happens. My immediate information about budget. Here you go. I'm going to share this with you right now. The entire budget template of what you're going to get, and we'll help you fill that up. Okay. So if you really look at it, budget is going to talk about growth parameters, growth budget, operation efficiency, people budget, selection replacement, compensation benefit, trainings, digitization, finance, computing interest. Now, this will help you to create your entire budget. So there are certain questions that we have to answer, and we will start doing that during the online sessions. Then this is how the budget gets filled. What are the growth parameters of a company? How are you going to grow this year? There are 21 such parameters that the company grows. So you have to pick up and choose according to your strategy, what are those, and we'll help you do that. Then we move on to the growth budget. This is where product-wise, if you see, we have given example. This is a fastener product in units. This is going to drive 20 units. Increase revenue is going to be 50%. So this is how you come out to the total growth. Then we are going to talk about operational efficiency, supply chain, manufacturing budget, quality budget, design and development, innovation and continuous improvement, all of that. Then there is people budget. Okay, we will help you build your people budget. So what should be the selection criteria? How much will you pay the selection agency? What are the compensation benefits? Labor, what are you going to pay? Safety, security के लिए कितना खर्चा करने वाले हो? Reward recognition program क्या होंगे? Satisfaction service कितना conduct कराएंगे? Performance appraisals कैसे होगा? All of that. Okay. ये comp and ben का structure है आपका. आप अगर 25 लोग लेते हो, समझो अगले साल आपको 40 लोग चाहिए. So 40 का पूरा हिसाब किताब सेट हो जाएगा. अगर आप कह रहे हो अगस्त में आपको 40 चाहिए और 5 तो 45 से. So सारा हिसाब किताब 45 से सेट होगा. So all of this is automated, my dear friends. We've created this automated sheet just for you, and it is independent. The tools are separate. It is independent whether you are a project business, service business, education business, whether you are a manufacturing business. हर चीज के लिए template है, and we'll be able to help you fill that template along with you. Okay, so this is not a training. This is a workshop, and this is a learning festival. So we're going to invest a lot of time in being with you. So close to 500 people. And the assistants, the expert assistant that's going to come is with 60 people, which is 1:9 ratio. So that's how we're going to work in Aram. Every year we do this, and it has always been successful. My humble request and recommendation here is people who feel that they intend to build this budget can be a part of this beautiful event called Aram. Any questions for me? More than happy to answer them.